Assalamu alaikum. So, welcome you in this session. Today, we are going to discuss the diseases of the breast, and we will discuss three case scenarios. So, as usual, we will start off with the first scenario. So, in the first scenario, Dr. Numan Tasneem, you will be the examiner, and Dr. Usman, you will be the candidate. Sir, please proceed ahead. So Usman, a 60 years old lady comes to you with the complaints of uh, a wound on her right breast for the last 2 weeks. How will you proceed with this case? Hello. Usman, have you heard me? Usman? Hello? जी आ रही है Oh, आवाज? yes. So 60 years old lady comes to you in OPD with the complaints of a painful wound on her right breast for the last 2 weeks. Okay. First of all, I will take thorough history from the lady regarding how does it happen, what is the size of the wound, what is the location of the wound, is there any overlying skin changes, is there any history of weight loss. I will take her complete gynecological history, onset of menarche, menopause, any history of previous surgery, any history of oral contraceptive pills, number of children, history of breastfeeding, any history of previous medical medication, and any history of swelling or lump inside the breast. I would also like to ask her about any history of bone pains, any history of uh, jaundice, weight loss, uh, family history regarding breast cancer, and does she has previously any other investigation or medical treatment she has given previously during past. Then I will examine the patient. I will examine both of her breasts, and after performing general physical examination, I will examine both her breasts to see any mass, or I will see the shape of the nipple, what is the site of the uh, ulcer, and I will also examine axilla, both axilla of the female. Then I will palpate her bones. I will auscultate her chest and try to find if there is any findings inside the breast. So on examination, there is a tender tender ulceration in the lower outer quadrant of the breast, which is about 2 by 3 centimeter in size, with visible pus exuding from the surface. And you can palpate a firm to hard mass underneath the ulcer. Okay, How my will you? differential. Okay, my And differential can would be there are either in. there is a fixed swelling in the right axilla. Okay, I will examine. I would see the position of the nipple, skin overlying breast. I will investigate. I Nipple is will. not visible. Okay, I will investigate. I will get my differential would be either inflammatory carcinoma of breast or abscess in the breast. I will ask about the history of fever. Is there any history of fever of the patient, and No history of fever. any history of weight loss? Yes, she is not sure, but she says that I have gotten weak for the past 1 month. Okay, then I will do the triple assessment. I will do first physical examination, and then I will do the ultrasound to see whether this swelling is solid or cystic. And I would also like to have I will examine her axilla to see whether lymph nodes are palpable or not, whether they are fixed to the underlying structure or not. I will thoroughly examine the swelling, its relationship to the chest wall and to the skin, You whether have it is. already, you have already examined. Now proceed next. What will you do next now? I will investigate with ultrasound, mammography, and then I will like to know if it is solid swelling. Then I will do the true cut biopsy of that swelling to see what is there any malignancy or not. Uh, Okay. Along So with if true cut biopsy, I will.
Yes. It turns out to be invasive ductal carcinoma. Okay, then I will also order. And what is the size of the swelling? Size was about 5 by 4 centimeter. Okay, then I will also order receptor status, HER2 new estrogen progesterone. And what is the status? Axillary lymph nodes are mobile or fixed? So I told you there is a fixed mass in the right axilla. Okay. It means that patient has having advanced carcinoma. I will do the metastatic workup. I will do the CT scan of chest, abdomen, and pelvis. I will also complete metabolic picture, CBC liver function test to see liver mets. I would also request ultrasound of abdomen to see ovaries. And is there any ascites? I would also give bone scan, get bone scan to see. All the tests, after all the tests, there is no mets. There you didn't find any mets. It means What do that you do? this is a locally advanced disease. I will discuss this case in the tumor board multidisciplinary team, and clinically it is stage 3B or stage 4, but it is not metastatic, then it is stage 3. I would discuss this case in tumor board along with oncologist and radiotherapist and counselor. I would like to downstage the disease with the and then I will plan surgery. Uh, What surgery I will would you plan? I would also like I would like do neoadjuvant chemotherapy. I will assess the response. If it is ER or PR positive, then I can also add No, 5 minutes. neoadjuvant chemotherapy, 3 cycles. I will assess the response of the tumor to the chemotherapy, and then I will go for modified radical mastectomy with axillary clearance. Okay. What are the what axillary clearance are you aiming? My aim would be level 2 axillary clearance. And if there are some palpable lymph nodes in supraclavicular fossa, then I can also do level 3 clearance. But normally, I would like, if there is no supraclavicular or internal pectoral lymph nodes, then level 2 axillary clearance I would like to do. Okay. So while you are doing surgery, you find that the lymph nodes mass is fixed, is partially fixed to the axillary vein. What will you do then? I will, with that great care, I would like to uh, uh, try to remove as much as lymph nodes as I can. But I would preserve the axillary vein, and if some matted lymph nodes is still attached, I consult vascular surgeon, and if he is able to remove the uh, lymph node with care, then we will remove. Otherwise, we will leave that adherent lymph node, and post-operatively, I will give radiation therapy to the axilla. Okay. So post-operatively, after 1 month, the patient comes to you with a diffuse swelling in a right axilla. What is your diagnosis and what will you do? My diagnosis is there is probably seroma in the axilla and lymph edema of the affected area, because there is and lymphedema. So I will get ultrasound of the swelling and see whether there is a seroma or there is a hematoma or anything. It is still a lymph node. If there is seroma, we can aspirate the seroma or we can put in a drain. Okay. Thank you, Osman. जी सर। हाँ So इशफाकत फीडबैक आपका इसी में कर लें सर, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जी सर, इसी में कर लेते हैं, क्योंकि ओके, जो है ना वो 10 मिनट्स, 10 मिनट फॉर द फीडबैक। सर बताएं आप ना। अच्छा एक तो ठीक है अच्छा तू गया एक तो अपना एग्जामिनेशन में अल्सर का मैंने जिक्र किया ना तो अल्सर का भी थोड़ा सा जिक्र कर दे कि उसकी अपना अल्सर का साइज क्या है उसका डिस्चार्ज कैसा आ रहा है फ्लोर कैसा है उसकी लुक कैसी है ठीक तो अल्सर था ना वो मैंने तुझे बताया था बीच में है जी सर। मेरा ख्याल है जब अल्सर होता है तो आप बजाय ट्रू कट के आप अल्सर की एज से बायोप्सी ले लेते हैं मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप
बजाय ट्रू कट करने के पहले ही अल्सर बना हुआ है, तो आप उसकी बायोप्सी, एक किस्म की इंसिजनल बायोप्सी आप ले लेते हैं। ठीक है, वो भी ले सकते हैं, इंसिजन बायोप्सी भी आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा उसकी तूने फिक्स्ड मैस की बायोप्सी ली थी या नहीं, जो एफ एन ए जंग? हाँ, एफ एन ए कराया है उसको, वैसे एफ एन ए कराया है, लेकिन अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन वैसे मेरा ख्याल है अगर वो मैस पैल्पेबल हो तो उसको एफ एन ए की जरूरत नहीं होती। लिम्फ नोड जो भी पैल्पेबल हो वो इनवेरिएबली इट इज अफेक्टेड। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ठीक है, बाकी ठीक है, सारी मेटास्टैटिक वर्कअप आपने करा लिया। उसके लिए आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था, ये जो कर दिया था मतलब। सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ऐसा केस है ना जो लोकली एडवांस किस्म का, तो वो उसको सर। टीम में डिस्कस होना लाजमी है। बल्कि हर सीए ब्रेस्ट डिस्कस होना चाहिए एमडीटी में। सर। और बाकी ठीक है, अपना एक्सिलरी वेन को बचाएंगे हमेशा, उसको आप रिजर्व करेंगे इन एनी केस। तो अच्छा, ये ठीक है, अभी बाकी मैं दरम्यान में कंफ्यूज हो गया था, ये बताएं कि एक्सिलरी वेन को रिसेक्ट कर सकता है वेस्कुलर सर्जन या नहीं करनी? मैंने देखा नहीं है किसी को, मैंने देखा यही है, लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर ना थोड़ी सी लगी हुई। वही मैं लेकिन भी अभी जो है ना, जब आपने ये सवाल पूछा ना, तो एक दफा मेरा दिल किया कि मैं कहूँ कि वेस्कुलर सर्जनों को एक्सरसाइज कर देना। सर शफकत, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? प्रैक्टिकली तो कर सकता है, शफाकत बताएगा बाकी। नहीं, देखें आपने need to preserve the execution, आप उसके पीछे जो टिश्यू बैंक आवाज है नहीं आ वो रही। ठीक है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आपने एक्जेक्टली वेन को तो ऑब्वियसली यू नीड टू प्रिजर्व इट। उसके ऊपर जितना लिम्फ नोड अगर रह जाता है कि टिश्यू बच गया, बट यू नीड टू मार्क इट। आपने क्लिप लगा देंगे रेडियो पे, सो दैट द पोस्ट ऑपरेटिवली द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट विल बी एबल टू लोकलाइज इट, so वेयर इज द ट्यूमर, ताकि फोकस उसकी रेडिएशन होंगी। ठीक है। ठीक है। तो ठीक। सर एक सवाल मेरा है, हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये जगह जगह कहीं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इसमें क्या फर्क है? एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कहीं एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है और एक जगह रेडियोथेरेपी यूज, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई खास फर्क है इनमें? देखिए एक्सटर्नल बीम तो है ना, जो आपके आउटर, आपके जो रेडियोथेरेपी का जो होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है बाहर होती है। एक तो इंट्रा कैविटी होती है, वो अंदर ले आते हैं उसका जो उसको क्या कहें यार, प्रोब कह लें। वो प्रोब आपके टिश्यू के अंदर चला जाता है। ठीक है, एक अच्छा। बाहर जैसे जस्ट लाइक एन एक्सरे। ठीक ठीक है। है। लेकिन अगर उसको वही जो रेडिएशन जो मिट करने वाला प्रोब है वो बॉडी कैविटी के अंदर चला जाएगा, तो वो हम्म। आपकी इंट्रा कैविटी हो जाती है, जो रेडिएशन है ना। ठीक है। तो एक्सटर्नल बीम तो ये ना, मतलब वो तो वर्ड से ही लग वो क्लियर है कि ये उसकी जो हम्म। प्रोब है वो बाहर है, जस्ट हम्म। लाइक एन एक्सरे की तरह ही ना। ठीक है। ठीक है। तो आप सर इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ नहीं, सजेशन इसमें फर्दर? इसमें जो है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, बाद में ऑर्डर नहीं करते। जब आपने हिस्टोपैथोलॉजी कर ली, एक दफा भेजा स्पेसिमेन भेज दिया, बाद में दोबारा नहीं रिसेप्टर के लिए ऑर्डर करेंगे। इट्स नॉट हाँ, उस जस्ट वक्त ही लाइक कर दें। ब्लड टेस्ट तो है नहीं है। हाँ। वो आपने एक दफा स्पेसिमेन ले गया, उसी के ऊपर सब कुछ आपने बोलना है। यू हम्म। नीड दिस स्पेसिमेन, आपने सेंड करना है ईआर स्टेटस, ईआर पीआर हर टू न्यू KI67। ठीक है, चार चीजें। हाँ, ये आपने उसी वक्त मेंशन हिस्टोपैथोलॉजी अलोंग विद रिसेप्टर स्टेटस। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, ये तो लोकली एडवांस जो है ना आपका ये था, सिनेरियो था, जो हम्म। कि। और आपने क्या ऑफर किया की सर्जरी क्या की थी इसके लिए? मैंने न्यू एडजुवेंट फॉलोड बाय मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी एज वेल डिपेंडिंग अपॉन, और अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्वेंस रिसेप्टर का इसका कोई सीक्वेंस इसका क्या होगा, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, देन कीमोथेरेपी? यस आफ्टर 1 मंथ जो है ना, वुंड हीलिंग के नहीं, बाद। सीक्वेंस क्या होगा, व्हाट विल द सीक्वेंस? आपने कहा ना रेडियोथेरेपी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, किस तरह होगा? पहले रेडियोथेरेपी फिर कीमोथेरेपी होगी? ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं। पहले पहले प्रेफरेबल होते हैं, कब कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद रेडियोथेरेपी जो है ना। अच्छा। ठीक है। कीमोथेरेपी पहले जो है ना करके, उसके बाद जो है ना हम्म। मतलब जो प्रेफरेंस यही होती है कि इसका, बाकी होता है कि फाइब्रोसिस, बाकी उस पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं कि कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है हम्म। पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन प्रेफरेबली है कि कीमोथेरेपी पहले और फिर हम्म। उसके बाद रेडियोथेरेपी है ना। अच्छा, फिर हार्मोन थेरेपी, अगर हार्मोन पॉजिटिव हो वो तो उसका हार्मोन आखिर थेरेपी में। पहले देनी? नो, बाद में, मतलब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देन आपकी जो हार्मोनल थेरेपी उसके बाद आती है।
क्योंकि हार्मोन थेरेपी तो 5 साल से 10 साल तक देनी होती है ना। हाँ, तो वो उसके बाद फिर वो चल पड़ती है ना। ठीक है। ठीक है, और बीच में फिर उसका आपने हिस्टोपैथ रिपोर्ट आई है, उसको भी चेक करना है, तो फिर ठीक हो गया। चलिए, ये तो लोकली एडवांस आपने वो कर लिया ना, कीमोथेरेपी का भी, न्यू एडजमेंट का भी आ गया, और बाकी जो चीजें हैं ना। अब तो मैं पूछूं? हाँ, आप पूछ लें, मैं हूँ कैंडिडेट बन जाता हूँ जी। मैं आपने टाइमर आपने रखना है जी अभी। ओके जी। Okay, Dr. Shafkat, you have a 38-year-old pregnant female presented to you with lump in her right breast that is rapidly enlarging. She has family history of breast cancer, and two of her sisters have died of breast cancer. There is rapidly enlarging mass with jaundice, generalized body pains, and she also has abdominal ascites. How would you proceed with this case? So this is the patient. Most likely, this patient has developed carcinoma of the breast, and she is pregnant. So I will take the history from the patient. I will ask the questions related to the lump, and when was it noticed, and then a single lump, and the size of the lump, and the There is one lump, 4 into 5 centimeter, rapidly growing, along with skin changes, and she has axillary lymphadenopathy. Okay. So then I will ask the further questions for the. It's most likely say carcinoma breast, which is advanced CA breast. So I would ask the question related to the risk factor for the development of the CA breast, and then I will ask the questions related to the the staging of the disease, whether there are any symptoms suggestive of the distant mets, for example, shortness of breath, abdominal distension you have already mentioned, and then the jaundice, any headache, visual impairments, and the bony pains. So I would like to ask about what is the trimester, and then what are the comorbidities as well. So Okay, she is in second trimester, and okay, she has bone pains. She has enlarged ovaries on ultrasound, and histopathology revealed FNAC, true cut biopsy revealed triple negative breast cancer. triple negative. Okay, so I would like to do the metastatic workup as well. So I would like to stage the disease. So obviously the patient is pregnant, and I would like to have ultrasound of the abdomen to see whether there are any liver mets or not, and then along with this alkaline phosphatase liver function test, and serum calcium level. So with the shielding, I would go for the chest X-ray as well in this patient. So after the metastatic workup, and the patient will be taken to the tumor board meeting and for the discussions for the treatment plan. Okay, tumor board meeting suggested that she should have neoadjuvant chemotherapy, and she is worried about her child. Oh, what would you do now, and what would be your suggestion regarding this case? So once her case will be discussed in the tumor board meetings, and then I will counsel the patient about the recommendation of the tumor board meeting, and I will also inquire about her preferences. So the keeping in mind the chemotherapy can be started, can be given during the second trimester. So in this patient, so most likely the recommendation of the tumor board meeting would be to start up with it's as a triple negative, and start up with the chemotherapy. So once the chemotherapy is completed, at least it will be continued till the 34 weeks. So and the response will be assessed. Okay, the chemotherapy response was good, and there was a dissolution of the tumor. What would would you like to give about a tumor? Sorry. After 36 weeks, chemotherapy is complete, 3 cycles, and Okay. gynecologist suggest delivery of the baby. And what surgery would you like to do now?
So the chemotherapy, once the chemotherapy has been completed at least 34 weeks, the chemotherapy will be stopped, and the gynecologist is on board. And after the delivery, so the further case will be discussed in the MDT, and it will be a patient will require the MRM, modified radical mastectomy, Okay. and followed by the specimen will be sent for the histopathology, and I would like to see the receptor status, and further treatment will be dependent upon the once I get the histopath report. Okay, I've already told that it's just triple negative tumor, and you have done modified radical mastectomy. What would you do post-operatively now? The child I has would been like to delivered. Okay, I would like to see the histopath reports. So what is the size of the tumor, and what's the grade? Is there a lymphovascular invasion, and margins are involved or not? What are the how many lymph nodes they are vested, and how many lymph nodes are positive? And so I would like to know these. And now they have harvested 12 lymph nodes and 5 were positive. Tumor size was 5 into 6 centimeter, and they were triple negative. What would you do now post-operatively? So margins are involved. What's the closest margin? Margin was clear. It was 1 centimeter beyond the tumor. It was adequate resection. Okay, okay. So the next, the patient will be again, it will be discussed in the multidisciplinary team meeting, and patient will, the recommendation will be the patient will require the adjuvant chemotherapy as well, and afterwards, and the radiotherapy as well, because the tumor size more than 5 centimeter. And Okay, after chemotherapy, patient wants to breastfeed her child from second breast. Would you allow breastfeeding to this patient or not? so Would she continue with the once the chemotherapy has been started, so it depends upon the chemotherapy, and most likely the recommendation would be, because chemotherapeutic agents, I will discuss it with my oncologist, and then I will get back to the patient. And most likely the recommendation would be to stop the lactation. Okay, and after chemotherapy, you have given radiotherapy, and how would you follow this case post-operatively? So post-operatively, the patient will be followed with the 3 monthly clinical examination, physical examination for the first 3 years, and then 6 monthly for the next 2 years. So the patient will require the patient will be counseled about the contraception at least two years, and annual mammogram, initial 6 months, and then annual mammogram, and Okay, after 1 bilateral year, mammogram. patient. Okay, after 1 year, patient wants some sort of breast reconstruction. 2 years follow-up, patient is fine. There is no recurrence. Her child has grown. Now she wants reconstruction of her breast. What are the options can you offer to him? So I will refer this patient to the plastic surgeon. So the options are with the flap. It depends upon the patient's preference and what is the body habitus, and what is their desires. So the options are the flap, deep inferior epigastric perforator flap, base flap, or tram flap, or the simple breast you can put in the Okay, silicone implant. okay. Thank you very much, Dr. Shifkan. Thank you very much. Thank you. Thank you. अब इसमें Sanuman? इसमें हाँ बोल फकत हाँ इसमें ये देखें, आप सिनेरियो को खुद ही क्लियर कर देते हैं ना। सो की मतलब आप उसके आंसर मुझे जो लगना खुद ही आप दे देते हैं आगे ना, तो उससे वो होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको होल्ड करके रखनी, तब मुझे पता चलेगा हाँ ये मैंने पूछी है कि नहीं पूछी ना। ठीक है, हाँ लेकिन घुमाया तो है ना केस को काफी। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन इसको भी अभी हाँ, इंफॉर्मेशन जो थी ना, खुद मुझे लग रहा था अगर वो इन्फॉर्मेशन अभी स्टार्ट पे था जिसका आपने बनाया, अच्छा सिनेरियो था विद प्रेगनेंसी विद, अब सिंपल कहते हैं ये ब्रेस्ट लंप है, फीमेल पेशेंट। अब देखते हैं मैं प्रेगनेंसी का पूछता हूँ आपसे कि नहीं पूछता कि प्रेग्नेंट भी है कि नहीं है, ठीक है। इसकी बाकी फीचर्स मैं मेटास्टेटिक की चीजें पूछता हूँ कि नहीं पूछता, लोकली एडवांस्ड ये चीजें मैं पूछता हूँ कि नहीं पूछता। अगर पूछता तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। फिर इसका हिस्टोपैथ का जो बाकी आए कि क्या ट्रिपल नेगेटिव, मैंने खुद इसकी भेजी है, मैंने ट्रूकट बायोप्सी कराई है कि नहीं कराई, ठीक है। तो उसके मुताबिक आगे अगर पहले सिनेरियो को जरा खोल दें तो वो मतलब मुझे लगता है वो फिर ज्यादा इजी हो जाता है ना।
बाकी ये बता दे कि इसमें पहले ट्राइमेस्टर में क्या प्रोटोकॉल है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है? अच्छा सर, जो कीमोथेरेपी है ना, इट डिपेंड्स पहले ना, मतलब स्टेजिंग है कि इसका ट्यूमर है कौन से वाला है ना, कीमोथेरेपी इंडिकेटेड है कि नहीं। इफ द कीमोथेरेपी इंडिकेटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द कीमोथेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड। सेकंड ट्राइमेस्टर में यू कैन स्टार्ट अप विद द कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी चलेगी 34 वीक तक। तो आखिरी जो आपने 4 वीक देने हैं रिकवरी के, जो डिलीवरी के वक्त सारे उसके काउंट्स ठीक हो जाए, हेमाटोलॉजिकल और बाकी जो चीजें हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव आपने उसको MRM, इसके अंदर जो सर्जरी जो होगी उसके उसमें जाएगी। अब पहले तो होता ही था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हुआ, कीमोथेरेपी भी इंडिकेटेड है, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी थी, करते थे उस पे ना। अब बेले ने जो उसमें तो ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने अभी उस तरह पढ़ा भी नहीं, लेकिन प्रीवियस तो यही रिकमेंडेशन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और कीमोथेरेपी इज इंडिकेटेड, तो ट्रीटमेंट आपको बड़ी सिंप्लीफाइड होती है। पेशेंट्स आप डिस्कस करते हैं और यू कैन स्टार्ट अप विद कीमोथेरेपी, और फिर उसके बाद वो तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो मेन इसका कैच ये है कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कीमोथेरेपी नहीं करनी। और जो वर्कअप है, वर्कअप के अंदर आपने सीटी स्कैन वगैरह, जो पेड सीटी या सीटी स्टेजिंग के लिए, वो नहीं करवाना। MRI करवा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड और बाकी ये चीजें जो है करवाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बाकी तो ठीक था वैसे। हम्म। अच्छा। ठीक। और प्रेगनेंसी, उस्मान आपकी कोई अच्छा मैं ये जो है ना, प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, दवाइयां और रेडिएशन जितना भी हम्म चीजें देनी होती हैं। हम्म अच्छा, आज मैं पढ़ रहा था कि यू कैन डू FNAC इन प्रेगनेंसी, सॉरी FNA कह रहा हूँ, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जो रेडियो एक्टिव वो है ना, आइसोटोप। लो डोज के साथ कर सकते हैं, यस। यू कैन। हाँ, इट इज सेफ, इट इज सेफ। जो लो डोज वो है ना। है, लो डोज के साथ यू कैन हम्म मैमोग्राफ भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में शील्डिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो भी दे सकते हैं। लो डोज के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हाँ। और जो ये कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं ये फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में जो है ना अवॉइड करनी है। हम्म हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। और लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर Only तक वेट कर अगर सकते। तो अर्ली अर्ली सीए ब्रेस्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें कीमोथेरेपी अगर इंडिकेटेड नहीं है, तो फिर तो डायरेक्ट अपनी हम्म सर्जरी पे चले। हम्म ठीक है। और इसकी जो BC जो जो अगेन उसके जो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने करनी है कि नहीं करनी, इट्स कोई हम्म कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है उसकी। हम्म ठीक है। और सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी भी कर सकते हैं विद लो डोज जो है ना आप हम्म उसके साथ। हम्म। लेकिन ये है कि फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में मुश्किल हो जाता है क्योंकि आगे लंबा चौड़ा टाइम रहता होता है। हाँ थर्ड बिल्कुल। ट्राइमेस्टर थर्ड वही ट्राइमेस्टर जो है ना वो। जनरली अर्ली ब्रेस्ट सीए ब्रेस्ट तो होता ही नहीं है, एडवांस ही होता है, लोकली एडवांस ही होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान। जो अगर अर्ली हो तो फिर तो अपफ्रंट आपकी सर्जरी होगी, और सर्जरी के बाद जो है ना, फिर आपने अगर इंडिकेशन बनती कोई रेडियोथेरेपी, तो वो रेडियोथेरेपी उसके बाद होगी, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद होगी। बिल्कुल। और जो है कीमोथेरेपी यू कैन स्टार्ट अप विद द कीमोथेरेपी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्जरी की, अर्ली सीए ब्रेस्ट है, कीमोथेरेपी हम्म एडजुवेंट सेटिंग में शुरू हो गई, और उसके हम्म बाद अगर इंडिकेशन थी रेडियोथेरेपी, तो वो बाद में फिर पोस्ट डिलीवरी होगी। हम्म हम्म। तो उसके अलावा हार्मोन थेरेपी हो गई। बाकी इसमें हमने जवाब यही देना है कि वी विल डिस्कस विद ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल, हाँ, हम्म। वो ही जो विल टेक होगा द। क्या, ट्यूमर ट्यूमर बोर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग, और उसकी जो रिकमेंडेशन होगी उसके ऊपर। हम्म ठीक हम्म है। हम्म। अच्छा जी। चलें जी, अभी अभी मैं आगे और थर्ड कुछ सिनेरियो। चीज़ें। हाँ, थर्ड सिनेरियो मैं आपको फिर दे देता हूँ। सर नुमान आप होंगे भी, है ना? ठीक है। Okay. A 45-year female patient has reported to you in your clinic with the history of the breast lump on the left side. So she noticed the lump 6 months ago. And how will you proceed in this patient? Lump is where? Sorry, I Yes, couldn't hear with you. the, with the, with the left-sided breast lump. Okay. So I will start with history taking. I will ask salient features of the lump, like when did she first notice it? You told me that she noticed it 6 months ago. I will ask her how did she notice the lump, and are there any other associated lumps on in the same breast or the other breast or in the axilla or any other part of the body, and any are there any associated symptoms like pain or any nipple discharge
or any other thing like any milk discharge from the nipple. Okay, And but I will there's a ask, single lump. There's a single lump in the breast. No lumps in the axilla, and there are no associated features like pain or the nipple discharge. okay. So I would like to take a complete history regarding the risk factors for development of malignancy in the breast, like her menstrual history, the age at menarche, and the age at and whether she's in menopause or not, and the age at the first child, and the lactation history, and any family history of CA breast, her dietary habits, and is she a smoker or not. I would like to ask all these questions. I would like to ask whether she had any surgery in the past, any surgery or any procedure in the past. Okay, And she I is would also like, she is premenopausal, and her mother died of CA breast, so at the age of 50 years. okay, so she has There is no positive family previous history. history of his surgery. There is no previous history of surgery. Yeah, no. Okay, so she is a high risk case of carcinoma breast as she has CA in her first degree relative. So I will then proceed to examination of the patient, examination of the lump, examination of the breast lump. And after taking consent, I will examine, I will expose both her breasts and both her axillas, and I will examine the breast lump, its shape, its mobility, and I will examine the nipple areola complex. I will examine the axilla, and I will look Okay, there's a for there's a retraction. there's a 2 centimeter 2 into 2 centimeter lump in the left upper outer quadrant. The skin is not involved. Overlying skin is normal, and it is mobile in relation to the underlying muscles. No lymph nodes palpable in the axilla. So what will your next step? It is, sorry, I cannot hear you. It is mobile with. So there's a 2 into 2 centimeter lump in the left upper outer quadrant. The overlying Okay, skin is normal, so it is mobile in relation to the underlying muscles. So the no lumps are palpable in axilla. okay. So, and the other breast is also normal. Yeah. So I will, as she has a positive family history, I would like to carry out a full triple assessment. I will first, after examination, I will request for an ultrasound of the breast, and along with that, I will also get a mammogram of the breast along with ultrasound, and I would like to see the findings. And depending upon the findings, So and it's depending upon, BI-RADS 5. so BI-RADS 5 means highly suspicion for malignancy. So I will now request my radiologist colleague for an ultrasound guided core biopsy of the lump. And after the ultrasound guided core biopsy, I would like to know the results of the So histopath histopath. along with Hmm. histopath along with ERP. If it is malignant, if it turns out to be malignant, then the estrogen and progesterone receptor status along with HER2 new receptor status of the specimen. So then we'll take the sample again. No, in the first sample, I would like to know all these things. Okay, right. So it's an invasive ductal carcinoma where the ER, PR, and HER2 new are negative. Okay, so I would also like to get an ultrasound of the axilla to see any lymph nodes So the involved or any. the lymph nodes are not enlarged. Okay, so this seems to be an early breast cancer. I would like to assess regarding any metastatic symptoms or metastatic signs in the patient, like any bone pains or any bony tenderness in the spine, or any liver enlargement, or any presence of any ascites. No, there are no features suggestive of the metastatic disease. Okay.
Okay, so I would like to discuss the case in MDT, in multidisciplinary team meeting, and discuss the case regarding its management, that should be the course of management, either surgery first, or should we go for any neoadjuvant treatment. But likely the recommendation would be to go for surgery first in this case. Why would they recommend the surgery first? Because it seems to be an early breast cancer, and it is its size is it's T1 and NOMO tumor. So possibly we can do a breast conservation surgery in this patient after discussing the pros and cons of the patient, and discussing regarding its So, benefits so and you think disadvantages. so your recommendation would be the upfront surgery, breast conserving surgery. Yes, it depends upon the MDT meeting, and afterwards, likely the decision So would be what to would be do a. what would be the most likely recommendation? Sorry, what would be? The MDT's recommendation. What would be the most likely recommendation? I think the most likely recommendation would be a breast conservation surgery along with axillary clearance through a separate axillary incision. Okay, then okay, so how will you do it? We will aim, I will involve, definitely I will involve the breast surgeon and the plastic surgeon in this case. And I would like to I would like them to take the lead of this case, as conserving our breast with complete excision of the tumor. We are aiming to completely remove the tumor along with 1 centimeter clearance margin at least. So Okay. I would like to involve the breast surgeon and the plastic surgeon in this case. Okay, so what will they do? So likely they will. How will they deal with the axilla? The axilla will be approached through a separate axillary incision, and possibly a level 2 axillary dissection should be done in this case, with Okay, preservation of now all the surgery has tumors. been done. Surgery has been done, and what will you do in the postoperative phase? So Patient in the has been discharged. Patient has recovered. His wound has, the stitches has been removed. What will you do? Okay, so again, when the patient will come for follow-up after her wound is okay and stitches have been removed, again the patient will be discussed in MDT, multidisciplinary team meeting, along with the oncologist and other members of the team, and likely recommendation would be to start with radiation therapy, maybe to the breast. Why would you radiate the breast? To prevent any recurrence of the tumor. Okay, so what else? And likely, Would you like to see the histopath report? yes, definitely. Mhm. I would see the So what would you histopath. like to see in the histopath report? I would like to see that the size of the actual tumor on the histopath, and whether our resection margins are clear or not. Okay, yeah. Mhm. And So the tumor size is 2 centimeter. The closest margin is 5 millimeter. 5 millimeter. Okay. And what about the lymph nodes we have removed? Lymph nodes, yes, What the 12 lymph node, they were harvested, and none of the lymph node were positive. Okay, so I think that the resection is adequate at present, and we can discuss the case in the MDT multidisciplinary team meeting regarding further management, and we will wait for the recommendations. What are their decisions? Thank you. So let me give you another scenario. For example, the patient has come to you with the mammogram report. The mammogram report shows that there's a microcalcification, but the lump is not palpable.
then how will you proceed? Okay, so if there are microcalcifications, then we can, and there is no lump on Lump radiological. is not palpable. No, there's no palpable breast lump. It was actually a screening mammogram. Okay, so if there is no lump, we will again discuss this case in multidisciplinary team meeting, and the recommendation, as she has a positive family history of carcinoma, most likely the recommendation would be a modified radical mastectomy, because Why modified radical mastectomy? because she has a positive family history, and detect and microcalcifications are have a great risk of So, so you will go straight away for with the modified radical mastectomy for the screen detected lesion. uh, it depends upon the decision of MDT, but What we will be their don't have, decision? because we don't have any histopathological diagnosis. So how will you We get the can, histopathological diagnosis? there is a technique I have heard, a stereotactic biopsy, but if in the absence of any lump, I don't think that it is possible, or is it possible? I don't know. Okay, okay, thank you. अच्छा, So इसमें कोई होती है you कोई? did no, you did very well, sir. आपने स्टार्ट से लेके जो उसको सिनेरियो को हम जिस तरह चलते गए हैं, you took the history की जो relevant points आपने कवर किए. इनिशियली जो मेटास्टेटिक थी साइन से वो जरा मुझे लग रहा था सिम्टम्स है ना वो उस पे आप नहीं आ रहे. बट you took the history about the lung, उसकी फीचर जितनी भी एसोसिएटेड फीचर्स आपने रिस्क फैक्टर्स वो सारे आपने गिनवाए मुझे. फिर इसी तरह एग्जामिनेशन के ऊपर लम का आपने पूछा, एक्जिला का बाकी बॉडी पे, और वहां पे आके सिस्टेमिक जो आपने जो वर्कअप था उसकी साइंस मेटास्टेटिक साइंस का भी आपने पूछ लिया कि सिम्टम्स तो नहीं है. देन यू वेंट थ्रू द डायग्नोस्टिक्स जो आपकी ट्रू कट बायोप्सी विद रिसेप्टर स्टेटस हो गया. अच्छा, यहाँ पे आके आपने उसके जो रिकमेंडेशन थी, अब इसे में देखें ये क्या था, ट्रिपल नेगेटिव था. ट्रिपल नेगेटिव. So although it's a tumor is 2 centimeter, but is a triple negative. Lymph node ठीक है. negative है. So triple negative is indication for new adjuvant chemotherapy. ठीक अच्छा, है. न्यू एडजुवेंट वैसे साइज छोटा है लेकिन अगर ट्रिपल नेगेटिव है या लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो दैट इज एन इंडिकेशन फॉर द न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी. ठीक हो गया. अब जब आपने ये कर ली इट्स अर्ली. हाँ. जो चाहे अर्ली हो तब भी. हाँ, जो ये होता है ना एग्रेसिव है ना, ये ट्रिपल नेगेटिव जो ना 5 इसकी सब टाइप्स है ना, जो ट्रिपल नेगेटिव है ये अग्रेसिव बायोलॉजी है, इसका बिहेवियर होता है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है. तो उसमें न्यू एडजुवेंट जो ना कीमोथेरेपी रिकमेंडेड है, या अगर पेशेंट लिम्फ नोड पॉजिटिव है, ठीक है, या जो इंडिकेशन है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी इन केस ऑफ अर्ली सीए ब्रेस्ट ट्यूमर. ट्यूमर रेशियो जो ना और ब्रेस्ट रेशियो उसका ट्यूमर वॉल्यूम ज्यादा है और बीसीएस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इंडिकेशन है न्यू एडजुवेंट की डाउन डाउन स्टेज करने के लिए. उसके बाद जब हम अब इसमें से देखें लिम्फ नोड जो ना वो नेगेटिव थे, अल्ट्रासाउंड भी आपने करा लिया, क्लिनिकली भी पैल्पेबल है, तो इंडिकेशन है फॉर द सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी. हाँ सर, ये करनी चाहिए थी. सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी वाज मस्ट इन दिस rather केस. rather than going for the क्लियरेंस. और उसमें दूसरे नंबर पे ही जब आपने ब्रेस्ट कंजर्विंग की बात की, यू नीड टू काउंसल द पेशेंट. आपने पेशेंट प्रेफरेंसेस भी पूछनी है. समटाइम पेशेंट दे डोंट ऑप्ट फॉर द ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, तो आपने पेशेंट से प्रेफरेंसेस भी पूछनी है कि वो पेशेंट क्या चाहती है, मेस्टेक्टमी चाहती है, ब्रेस्ट कंजर्विंग चाहती है. साथ ही वहीं पे काउंसलिंग के ऊपर ही आप उसकी, फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर कहते हैं कि मेस्टेक्टमी करनी तो साथ अपने रिकंस्ट्रक्शन बाकी चीजें वहीं पे आपने काउंसलिंग का लफ्ज यूज करना. ठीक है. ठीक हो गया सर. अब अगर आप सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, फिर आपसे कहता है कि हाउ विल यू परफॉर्म द सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी. या आपने अच्छा किया, ये अच्छा किया आपने. आई विल रिक्वेस्ट द breast surgeon to take the lead in this case because early breast cancer you need to do the oncoplastic procedures. कि उसके बाद आपने जब करेंगे तो फिर वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट वाले प्रोसीजर करने, ऑनकोप्लास्टिक प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं. तो ये आपने अच्छा किया कि उनको इन्वॉल्व कर दिया, उनको क्या वो लीड लें. तो एनीवे मतलब आप सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी का पूछा जा सकता है कि जी सर हाउ फिर विल सिंपल मेस्टेक्टमी करेंगे. हाँ, किस तरह करते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी सर, किस तरह करते हैं? In sentinel lymph node biopsy, we inject a dye, preferably I think methylene blue,
at the site of the tumor, and then we assess the drainage with a gamma camera, assess that which is the first group of lymph nodes which is draining the tumor area. With a So gamma नहीं, camera, आपने you have injected the नहीं methylene blue. सर, दो चीज Methylene अलग blue. अलग हैं ये। एक मिनट. You have injected the methylene blue. हाँ हाँ So the gamma camera will not detect the methylene blue. Methylene blue. It's visible that आपको blue color नजर आएगा ना. तो gamma camera का क्या होगा? वो अच्छा सॉरी, gamma उसके लिए camera क्या तो करना होगा? वो रेडियो उसको पिक करता है ना यार। तो उसके लिए क्या करना टेक्नीशियम होगा? 19। तो इंजेक्ट करना पड़ेगा ना कुछ. हाँ, मुझे एक बार बता दे, टेक्नीशियम मैं जरा भूला यार, टेक्नीशियम मुझे। टेक्नीशियन 99 लेबल्ड एल्ब्यूमिन होता है, रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन, या सल्फर आपका कोलाइड। कोलाइड, सल्फर कोलाइड है, या एंटीमनी है, ठीक है ना. लेकिन ये आपने ट्यूमर के अंदर इंजेक्ट करना है 5 आवर्स बिफोर द सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी. उसमें इंजेक्ट कर दी पेरीट्यूमरल. डिफरेंट पेरीट्यूमरल है, सक्कम जो पेरीएरियोलर है, इंट्राडर्मल जो है ना इंजेक्ट करते हैं. तो आपने 5 आवर्स पहले इसको इंजेक्ट कर देना है, जो रेडियो लेबल्ड है, टेक्नीशियम 99 रेडियो एक्टिव जो लेबल्ड है एल्ब्यूमिन जो है, ठीक है. ठीक और है फिर उसके बाद आपने जब आना है ड्यूरिंग द सर्जरी, आपने फिर मिथाइलिन ब्लू को इंजेक्ट करना है पेरीट्यूमरल, ठीक या है आप पेरीओरल कर लेते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, वो गैमा कैमरा से भी ना, वो जब लगाते हैं ना उसको सिर्फ एक्जिला के ऊपर रखते हैं, तो जहां पे रेडियो एक्टिविटी होगी तो वो उसकी साउंड करता है, बीप करता है वो कि यहाँ पे ठीक है, है ठीक है. और फिर उसके बाद आप देते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए, आप नेक सेपरेट इंसिजन देते हैं एक्जिला में, जस्ट अंडरनीथ द स्किन, जो हेयर लाइन है ना एक्जिला की, उस वहां पे इंसिजन दे देते हैं, ठीक है. जहाँ पे आवाज अब ज्यादा देता है वहां पे इंसिजन देते हैं, जहाँ पे वो आवाज जी देता सर, है। जहाँ हाँ, आवाज आ देता है। वो आवाज मिल रही होगी, ठीक है. उधर निक दे दिया ठीक है आपने. निक देने के बाद वेजेस जनरली हेयर लाइन से नीचे जो ना इंसिजन होता है, वहीं पे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है. और वहां पे आपने डिसाइड करेंगे ब्लू लिम्फेटिक्स आपको नजर आएंगे जो लीड करेंगे उस टुवर्ड द सेंटिनल लिम्फ नोड. तो सेंटिनल लिम्फ नोड बास का जो 3 कहते हैं लिम्फ नोड जो है ना, डुअल टेक्निक से करते हैं एटलीस्ट, जो डाई के साथ और रेडियो एक्टिव लेबल्ड एल्ब्यूमिन के साथ, या एक और भी डाई होती हैं जो फ्लोरेसेंट होती है, इंडोसाइनिन ग्रीन, या फ्लोरेसेंट डाई है, ब्लू डाई वो भी होती है. तो उसके साथ करने के बाद फिर आप उसके लिम्फ नोड निकाल लेते हो, तो 3 लिम्फ नोड, सेंट्रल लिम्फ नोड जो है ना निकाल लेते हैं, और उसको भेज देते हैं फ्रोजन सेक्शन के लिए, ठीक है. तो फिर आपने तो अगर ऐसे तो, टाइम हाँ, पे सर्जरी के टाइम पे फिर दोबारा इंजेक्ट करने की क्यों जरूरत होती है, अगर 5 घंटे पहले लगा दिया तो? वो तो रेडियो एक्टिव किया है ना सर, वो तो रेडियो हाँ, एक्टिव आपने किया था ना, ये तो डाई है, दूसरी बार ब्लू ये डाई है ठीक जो उस वक्त इंजेक्ट करते हैं. सर, इसमें ये दोनों ठीक है। चीजें लगाते हैं। सर नुमान, इसमें ना अकेले की सेंसिटिविटी कम है। अच्छा अभी ठीक जो है नई रिकमेंडेशन ये है कि अगर 98 99% सेंसिटिविटी लेनी है, पहले सिर्फ या मिथाइलिन ब्लू करते थे या रेडियो लेबल्ड सल्फर कोलाइड करते थे। अब वो कहते हैं दोनों करें। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, तो आप उसको दोनों करें। पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी करें और मिथाइलिन ब्लू भी करें। अच्छा ठीक है दोनों इंजेक्ट करें और उसके बाद उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, डायग्नोस्टिक यील्ड बढ़ जाती है इससे। ठीक बिल्कुल. है। ठीक है फिर उसके बाद आप जो है ना, क्योंकि अक्सर जगहों पे अगर गैमा कैमरा मौजूद नहीं है, तो फिर आप मिथाइलिन ब्लू इंजेक्ट कर सकते हैं सिर्फ। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों, आइडियली आप दोनों बोल दें कि दोनों करेंगे, क्योंकि अच्छा इसमें सेंसिटिविटी जो है ना, जो पिकअप रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है दोनों को मिला के। अच्छा ठीक है जी सर। तो वो उसके बाद फिर आपने वो लिम्फ नोड निकाल लेना है। बाज औकात एक लिम्फ नोड सेंटिनल होता है, बाज औकात एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ठीक है। पहले जो है ना, ये आज मैंने पढ़ा है। पहले मैं समझता था कि सिर्फ एक लिम्फ नोड इज सेंटिनल, अभी वो कह रहे हैं कि दो भी हो सकते हैं, जिस तरह सर बता रहे हैं। ब्लू लिम्फ हम्म, नोड फिर जो ना. उसको, हाँ, फिर उसको भेजना है आपने बायोप्सी के लिए फ्रोजन सेक्शन। उसमें अगर मैक्रो मेटास्टेसिस या है तो फिर आपने एक्सिलरी डिसेक्शन करनी है। ठीक है अगर नहीं है, वो नेगेटिव आ गए लिम्फ नोड, तो फिर एक्सिलरी डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल मेस्टेक्टमी कर देंगे अर्ली कार्सिनोमा ब्रेस्ट में। अच्छा ठीक है हाँ, और उसके बाद फिर अपना, अगर आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए फर्ज है कि आपने रेडियोथेरेपी देनी है। अगर रेडियोथेरेपी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फिर आप जो है ना ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकते। रेडियोथेरेपी ब्रेस्ट को देनी है ना आपने? जी, ब्रेस्ट को। अगर एक्जिला में है तो फिर एक्जिला को भी देनी है।
अगर एक्सिला में 4 से ज्यादा लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गए हैं तो। ठीक है। लेकिन वो अगर एक्सिला में होगा तो वो तो स्टेज चेंज हो जाएगी, अर्ली नहीं रहेगा ना, फिर वो तो लोकली एडवांस्ड हो जाएगा। नहीं, एक्जिला में नहीं, एक ठीक है। आपने एक्जिली डिसेक्ट कर ली है, विल नॉट रेडिएट द एक्जिला, उसको रेडिएट नहीं करना, लिम्फोडीमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपने एक्जिली लिम्फ नोड डिसेक्शन की हुई है तो फिर एक्जिला पे रेडिएशन नहीं देनी। ठीक है। नहीं सर, इसमें अगर 4 से ज्यादा लिम्फ नोड एक्सिला में पॉजिटिव है ना, ये इसमें वॉशिंगटन में लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि रेडिएशन ये टू इसके एक्सिला। ये पहले हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सारा ये था, लेकिन इसमें बहुत नोट ये लिखा हुआ है कि जी अगर आपने डिसेक्शन की है ना, एक्सिली लिम्फ नोड डिसेक्शन की हुई है, तो फिर वो कहते हैं कि ना आपने फिर ना उसको डबल ना करेंगे, एक्सिली क्लियरेंस फिर रेडियोथेरेपी ना करेंगे उसके लिम्फोडीमा होने के। ये पहले मैंने भी यही कहा था कि इसके भी है इसका ना, लेकिन ये एक दो और जगह में मैं देखा उसमें ये था, बार बार ये उन्होंने लिखा जी डबल आपने नहीं काम। चले बहरहाल, इसमें तो मैंने हाँ दोबारा इसको पढ़ा है, दोबारा भी इसको मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे जो समझ आई उसमें एक पूरी हेडिंग है, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक पूरी तो हेडिंग है कि हाँ, वो पहले भी यार, पहले भी हमने ये किया था, डिस्कस इस पे किया, इस बातचीत इस पे हो चुकी है ना, इसमें तो जी फिर ये सर। करना नहीं करना ना। हम्म, अच्छा शौकत, तूने क्या क्या हाँ बताया था? न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी इन अर्ली सीए ब्रेस्ट के इंडिकेशंस जरा दोबारा हाँ, रिपीट कर। ये बेले के अंदर है सर, न्यू एडजुवेंट जो न्यू एडजुवेंट जो थेरेपी है ना, सिस्टेमिक थेरेपी जो है, हम्म। उस पे एक बना हुआ है जो इंडिकेशन लिखी हुई है, जो बेले में चैप्टर है ना, सीए ब्रेस्ट वाला अच्छा चैप्टर क्या उसके क्या अंदर। क्या हाँ, उसके अंदर है। अच्छा सर, ये है जो क्या पेज है ना, क्या? तो सर ये जो मैं आपको बता रहा था ना, वो लिखा है एडजुवेंट रेडिएशन टू चेस्ट वॉल एंड एक्सिला आफ्टर मेस्टेक्टमी include T3 and T4 tumor, attachment to pectoralis fascia, positive surgical margins, skin involvement, involved internal memory node, adequate, inadequate or no axillary dissection, 4 or more positive lymph nodes, residual tumor or axillary vein. अगर आप एक्सिलरी वेन को क्लियर नहीं कर सके, अगर आप एक्सिलरी वेन को क्लियर नहीं कर सके, आपने एमआरएम भी किया हुआ है, तो जिस तरह पहला सिनेरियो था कि जब अगर लिम्फ नोड ज्यादा है और एक्सिलरी वेन क्लियर नहीं हुई, तो एक्जिला को भी आपने, वो रिस्क तो है लिम्फेडिमा का, लेकिन जो है ना, आपने फिर भी एक्जिला को रेडिएशन देनी है अगर जो है ना 4 लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गए, उससे ज्यादा आ गए। ठीक है, ठीक होगा। चलो, आज के तो तीन हमारे सिनेरियो हो गए। ठीक हो गया सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी ये आज फैसला हो गया कि कीमोथेरेपी प्रेगनेंसी में सेफ है, दे सकते हैं। नहीं, फैसला क्या होगा, हमारा फैसला में लिखा हुआ है, बस सेकंड हाँ, ट्राइमेस्टर में दे, सेकंड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हैं onward। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं सेकंड देनी। सेकंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि 34 वीक है तो आगे फिर उसको रोकना है ना, आगे जो लास्ट 4-6 वीक्स है वो उसके हम्म, रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, ठीक है सर नुमान, और कोई चीज? नहीं बस ठीक है, वही मुझे टेबल नहीं मिल रहा, वो जो तू कह रहे हो टेबल किधर पड़ा टेबल हुआ है? नहीं है उसमें, मिल जाएगा, टेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो चलो मैं अच्छा ठीक है, मिल गया, ठीक है। मिल गया ना। हाँ। To downsize the tumor to facilitate breast reconstruction surgery, हम्म are two new positive tumors. हम्म Two new positive, triple negative, premenopausal women. ट्रिपल नेगेटिव में भी है, और हर टू न्यू पॉजिटिव में भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ट्रिपल नेगेटिव है हर ना। हर टू न्यू पॉजिटिव जो ट्यूमर होता है वो गंदा ट्यूमर होता है ना, हर टू न्यू नेगेटिव प्रोग्रेसिव फैक्टर है। हम्म, तो ठीक है। और कोई सर नुमान, और कोई चीज कोई, फिर हम इसको खत्म करेंगे। बस बाकी ये मेरा ख्याल है रेडिएशन वगैरह के फैसले, चलो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये उनको हम कहेंगे ये एमडीटी का फैसला होगा, मतलब हाँ हम बिल्कुल, इसको
लेकिन उतना ये कि आपको ये पूछना चाहिए कि क्या होगा क्या, तो आपके ये चीजों अच्छा। का पता होना चाहिए। हाँ, चीजों का पता होना चाहिए, मोटी मोटी तो पता हो ना। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। तो चलें सर, कल क्या चलें, करना है? कल क्या पढ़ना है? कल कल हम इसका कर लेते हैं जी, थायराइड कर लेते हैं। ठीक। ठीक है। पूरा फुल थायराइड? वो इसके सिर्फ सिनेरियो जो हैं, क्या क्या हो सकते हैं थायराइड के अंदर, टॉक्सिक वाला हो सकता है, सर मेरा सिंपल ख्याल है मल्टी नोडुलर। थायराइड को जरा 2 दिन देते हैं। एक दिन हम ट्यूमर अलहदा करते हैं और एक दिन हम ये जो MNG और थायरोटॉक्सिकोसिस और जो है ना ये चीज अलहदा कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ, क्योंकि थायराइड की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशनें भी काफी सारी हैं, वो हम्म, भी टाइम मांगती है थोड़ा सा। ठीक होगा, ठीक ठीक होगा। है, ठीक है। 2 दिन अगले थायराइड को दे चलो। देते हैं। हाँ, कल फिर यूं ठीक करेंगे, होगा। कल बिनाइन डिजीज, थायराइड की बिनाइन डिजीज कर लेते हैं ना, ट्यूमर छोड़ के। ठीक होगा। ठीक है। ठीक ठीक है। होगा। ओके ओके। चलिए जी, ठीक है जी। थैंक चलिए, यू, यहाँ अस्सलाम पे वालेकुम। सिनेरियोज हो गया। ओके। ओके, हाफिज, सलाम थैंक यू। अलैकुम।